वेलकम एवरीबॉडी टू द शो। जो भी जुड़ रहे हैं, आज थोड़ा सा हम लोगों ने शो में हम लोग आज आए हैं और कम लोग हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सनातन धर्म पे जो आक्रमण हो रहे हैं, अटैक्स ऑन सनातन धर्म एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो वी हैव विभूति झा जी, वी हैव पंडित शरद मोहन जी, एंड वी हैव अदर्स हु मे जॉइन और मे नॉट जॉइन। सो विभूति जी, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ये रहेगा कि ये जो भारत में और अमेरिका में दोनों जगह सनातन धर्म पे जो जैसे टेक्स्ट बुक्स है हमारी अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही हैं इस तरह के अटैक्स को, द टेक्स्ट बुक्स इन अमेरिका वी कैन सी दैट दे हैव openly mentioned how Hindu is a creator of caste system, and इतना भी बोलते हैं कि कृष्णा क्रिएटेड कास्ट सिस्टम। एंड इनफैक्ट आपने ट्वीट भी फॉरवर्ड किया था अभी जो रिसेंटली which was mentioned by the Kona. But in India, we see a different version of Sanatan Dharma. So that is my opening statement. So please go ahead, Vibhuti ji. नमस्कार व्यूअर्स, शरद जी, पंडित जी, आदित्य सत्संगी जी, सबको नमस्कार। बहुत देखिए, मैंने तो आई हैव सेड इट इन माय ट्वीट प्रोफाइल दैट आई एम अ सनातनी, and I have said it with Sanjay Dikshit ji on Jaipur Dialogue that this century belongs to Sanatan. I'm not talking about years and decades. I have said that this century belongs to Sanatan for a clear reason that Sanatani beliefs, which are universally known as universal principles, they are based on nature, laws of nature, right? So what is happening right now is that science and technology have become the biggest allies of Sanatan Dharma. And religion as practiced today is getting more and more visible. So if you look at it this way, the religious practices today are driven by a certain mandate, diktat, or whatever the text or the book says. I have nothing against that. We're analyzing the situation. So in that scenario, what happens is that it was essentially based on fear and ignorance. The one man who wrote the book or dictated the book, he knew everything. Rest of the people were ignorant. They didn't know where heaven or hell was. They did not know that the earth was flat or round. There was so much information which was based on ignorance and fear or deductive logic or inductive logic, as you call it. But as science has advanced, today we know that thunder and lightning doesn't happen because gods are angry. Today we know that men are responsible for the gender determination of child. Today we know that we can go to the space. Today we know that earth is no longer flat. These are the things that are happening, and it is exposing the fear and ignorant element of religion. And as a result of which, our belief system of Sanatan is gaining ground. A lot of people are leaving the traditional religion and traditional religious practices because they say, not true. If God existed, why did he kill 6 million or 8 million people due to COVID? What had they done? So if you begin to say it was their karma, then it is part of our Sanatan principle. Think about it from that perspective. So on many considerations, the primacy of Sanatan principles is rising. And the traditional religion as practiced is crumbling. And that's the reason when you see a miracle here or a miracle there, people wonder, oh, that's not true religious practices. That's my opening statement on this, that the reason why the Sanatan is under attack is because the traditional religions find their base is weakening, their arguments are getting shattered, and they cannot argue against the point, a very simple point, the sun has no religion, trees have no religion, animals have no religion, river and ocean has no religion, we the people have religion. So it is a man-made concocted item. God did not create religion, in my opinion. God created life,
and created life sustaining forces, and as a result of which, religion is an element of life and a cultural element of life. Just as a Bihari food is different with sarson ka tel, coconut is used in South, peanut and groundnut elsewhere. So, can we say that a particular oil is the best oil in the planet Earth? No. People use whatever nature made available in that specific geographical entity. And that's it. That's simple life. So God created life and created life sustaining forces. Beyond that, it's like you are wearing a blue shirt, somebody is wearing a t shirt, I'm wearing this. It's all because we could afford it, like it, and felt it suitable at that time. Suitability, availability, and affordability. That determines our quality of life. This is natural law. Apple has no religion. Tiger and elephants have no religion. I'm very strong on this thought of mine. The world needs to know our thoughts, the truth, the essential truth. Thank you. Sharad ji? अ, सभी श्रोतागण को जन्माष्टमी की शुभकामना हैप्पी जन्माष्टमी टुडे एंड आई विल स्टार्ट विथ माय बुक में एक लास्ट टू phrase which I have written अस्तो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर मा अमृतम गमया ओम शांति शांति शांति. Now this prayer doesn't encompasses any religion or any hatred for any particular sect or anyone. It's just praying for the world peace. So this is what Sanatan is, and this is where people from certain sect or people who are not in a sect, they have problem because we are not taking one particular path or one particular belief system, and I have respect for all the belief systems. So personally, I have no problem to coexist with anyone, but there is a problem globally for Sanatan. And लोग कहते हैं कि सनातन is very ancient and it's aggressive because of the primarily उनके ऊपर एक ही इल्जाम लगता है कि caste system, right? If you go to any American universities, whenever they talk about the so-called Indic, अब तो भारतीय हो गया, लेकिन Indic civilization related contribution to the world, they all stop they all stop at one common understanding, which is it has given caste system to the world, which is very wrongly misunderstood. And our scholars have not properly put our case to explain the world. We get emotional, and emotion will not take to any logical conclusion. So it has to be continuous process of educating first our own people, our own kids, and then simultaneously we should also educate our other brothers because we believe in humanity. We don't hate anyone. Our God is not jealous. We love everyone. We pray for the world peace. Now, coming to the regressive part, this morning when Aditya ji shared this topic, I was just searching my laptop, and if you can see, Hinduism. I went to the very progressive, so-called progressive newspaper of the world, NewYorkTimes.com/topic/subject/Hinduism. They have one page dedicated to that. And when I scanned that, it made me, fill with anger and hatred. How can, somebody be so blind, a paper like New York Times? Everything about Hinduism they have written is either from a political perspective or from a hierarchy perspective, like they are somewhere in a highest pedestal and seeing a regressive thought process or one of the best belief system of the world, which is Sanatan. And it's all political, whether it's a Vivek Ramaswamy, Rishi Sunak, and now for them there is one more problem. There is based on the new election result in Singapore, there is another Indian origin person, Mr. I think Thrugman or somebody Indian origin. He is a president elect of Singapore. So the three head of the state
not two head of the state, Vivek Ramaswamy is still in the race, are Hinduism. From nowhere, they came from Hindu belief, and they're proud of, they are. Uh, for Singaporean, I haven't researched much, so I can't say, but he's Indian origin, but I don't know about his belief system. So you see, it's not happening just like that. Modi was already a problem for the world because he openly professed his belief system, and the world was getting used to this guy, and then suddenly Rishi Sunak comes in, this Vivek Ramaswamy comes in. So this will continue for some time now till some course correction is done, and it has to be done by our own people. And I will in the next this is my opening statement. The next statement I would like to discuss about the event happening in Tamil Nadu. Aditya ji, back to you. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का शेयर करने के लिए महानुभाव। पहली बात तो सनातन धर्म तो आत्मा का है, ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है और एकमात्र कल्चर है जो पूरी दुनिया में अभी भी परवेजिव है। मतलब कहीं भी चले जाएं सनातन धर्म आज भी है, चाहे मैक्सिको हो, चाहे भारत हो, चाहे इंडिया, चाहे यूएसए हो, सनातन धर्म का वैल्यूज अभी भी नेटिव अमेरिकन फॉलो करते हैं। जैसे कि हम लोग ब्लू मून देख रहे थे और दूसरे दिन जब हम ब्लू मून देख रहे थे, मैं शरद जी थे उस समय घर पे, उसी समय बलराम जयंती भी था, तो बलराम का अपीयरेंस भी फुल मून पे था। लेकिन पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, कोई ब्लू मून के नाम पे कर रही है, कोई अपना नेटिव अपना कल्चर कर रहे हैं, हम लोग अपना मंत्र चैंटिंग कर रहे थे उस समय। सो इज एवरीवेयर, परवेजिव है, ऑल परवेजिव। तो सनातन धर्म की पे तो कोई आक्रमण कर नहीं सकता। लोग किस पे आक्रमण कर रहे हैं? वर्णाश्रम पे आक्रमण कर रहे हैं, किस तरह वर्ण की व्यवस्था को तोड़ दिया जाए। अब अननोइंगली कर रहे हैं, अभी यूरोपियंस को मालूम नहीं है, चर्च को मालूम नहीं है किस पे कर रहे हैं वो अटैक। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने सनातन धर्म को एक बीमारी से कंपेयर किया और वो बात करने के बाद में इतना इतना और ही इज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, युवा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उदय निधि। अभी बात हो तो उदय निधि है, स्टालिन है, तो मतलब सनातन तो उदय होगा ही जैसे विभूति जी ने बोला, लेकिन स्टालिन का तो परमानेंट हो गया अभी इस समय। क्योंकि स्टालिन वैसे भी इतिहास में हम लोग जानते हैं कि नेहरू वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय स्टालिन, जो भी उन्होंने काम किया सब स्टालिन के माइंडसेट पर ही किया। तो विभूति जी, मेरा प्रश्न ये है उठता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे आर्टिकल 51 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ब्रदरहुड को खत्म करता है, भारत में एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के विरुद्ध लड़ाता है, आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 51, लोग चेक कर सकते हैं। क्या भारत की गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है इस तरह के जो आघात करते हैं, हम लोग फ्री स्पीच के नाम पे इनको टॉलरेट करते रहेंगे या कभी हम लोग इसमें हम लोग एक्शन भी लेंगे? That's the $1 million question, in the sense that, sometimes you feel frustrated. There is a very interesting line which I read, I've heard and read that both, that criminals and thugs take advantage of the compassion of the society and the rule of law. When the criminals and the thugs take advantage of what is offered and what exists, then there is a problem. Because the rule of law is designed to encourage people to talk about, because our Sanatan principle is all about debate, dialogue, discussion. In the process, Niraj Chaudhary called it correctly, we became the argumentative Indian, perpetually arguing. But the important part here is that who is taking advantage and who is abusing. These are two different things. And we need to make a distinction as aware citizens. The system has to make a distinction between the two elements, abusing and using. That's the critical part. What we are seeing here is that, as the Congress party said recently, that it is freedom of speech. But if we call out certain religious elements, then we are called as suffering from a phobia. You cannot have dual standards of justice or interpretation of the rule of law. You can't. There has to be an interpretation. And I'm of the opinion, ask me any question you want about me, but do not deny me the right to ask you what I think about and what I consider as an issue.
This is very simple. Reciprocity is the need of the hour. So if Udaynidhi is Stalin, and I'm little perplexed about it, that how can his father be named as Stalin? So whether he has imported that name or given that name with an intent that he will become Stalin later, Aditya, you said it yourself. It was a dictator. God knows how many people he killed in his life. So if you have that mindset, then your actions also end up being something like that. So what did he say? Sanatana Dharma is like dengue, like malaria. It needs to be eradicated, right? Now that is something that you can't take lightly as a freedom of speech. Is a classic American interpretation that you have the freedom of speech, but you can't shout fire in a theater. So what did Sanatan do to them? To cause that kind of a destructive mentality, destroy, eliminate, eradicate. These are dangerous words, whereas I believe it is the era of Sanatan. So the question here is very simple. Adiji is a very pertinent point. How long do we take it? Because Ramayana teaches us a lesson. My biggest takeaway from Ramcharitmanas is the concept of Lakshman Rekha, this far and no further. हमें भी अपनी लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी, because I'm a believer that we must draw a Lakshman Rekha in all our aspects of life. This far and no further. Father and son, father and husband and wife, friends, you cannot take anything for granted. You cannot take me for granted. Assuming, we know that assumption and presumptions are what is known as popularly known as the major FUs of the world. This is something that we cannot allow that to happen, must not allow that to happen. So, like we live in America, there is a 55-mile, say, speed limit posted on the highways. You can drive 65 and 70, but you bear the consequences of driving at 70 if caught or stopped. You don't justify it at that time that I was in a hurry. And the cop will tell you that if you were in a hurry, then you got to be careful driving care. You can cause an accident and your purpose will not be met. That's the point which we have to understand, that this needs to be stopped. I'm glad that Supreme Court has so moto taken the case. Because if that is not hate, I wonder what is. So you and I cannot take that lying low, because you take that lying low and then those people will keep abusing you. And that's the point which I'm trying to drive. He's not denying it. He says, I will fight to the end. Then in that case, are you backing down? डर गए उसके, या उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं कि अच्छा ओके आओ देखें जरा किसमें कितना है दम, है ना गाना एक, लेट्स फेस इट आउट, आई एम रेडी टू. शरद जी. ओके, तो ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, द्रविडियन टॉपिक. और मैंने अपने सेकंड बुक में भी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, इंडिया एंड अनब्रोकन सिविलाइजेशन, आर्यन, द्रविडियन एंड आदिवासी, उसमें मैंने ये सब काफी कुछ लिखा हुआ है. द इम्पैक्ट ऑफ कैडविल और the school system which I come from India is called Denobly School, but there was a gentleman who started this Denobly School 400 years back, 1600 में. There was a gentleman called Father Denobly who came from Italy, and he learned Sanskrit, he learned Vedas, and then the Chota Nagpur area of the Bihar, which is now Jharkhand. The school was good. School was definitely good, but there was in the give and take, which was a lot of conversion happened. So entire Chota Nagpur say, so that's one aspect of it. Now coming to this Dravidian politics, I think the problem is a lot of North people in North or West India, they do not understand. The mindset of what is this Dravidian politics. Dravidian politics doesn't mean it's a Tamil politics, but there is a major group in Tamil Nadu who thinks that, and there were some real stories also where there was some Brahminical atrocities which they cite to, and because of that, the entire 80% or 90% of the population, and there is only 3% population of Brahmins in Tamil Nadu. So they started this Dravidian movement 100 years back with Mr.
वेंकट रामा सैमी, नॉट स्वामी, सैमी, SAMY, जिनको बड़े बड़े गुरु या बड़े भाई ऐसे कुछ, तो उनका तमिल वर्जन नेम है पेरियार। पेरियार इज जस्ट अ सरनेम, जैसे किसी ने बोलता है कि ही भैया है, भाई है, दबंग है, तो दबंग इस पेरियार इज नॉट अ नेम, इट्स बट इज बेसिकली अ टाइटल, बट हिज नेम इज, जिसके नाम में वेंकट हो, जिनके नाम में राम हो, वो इतना बड़ा राम विरोधी हो, यू नो। So, now, again, I have written very deep in the books. I will not discuss deep. द्रविडियन पॉलिटिक्स को बहुत दिन तक नजरअंदाज किया गया। इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा, she wanted to put some lid on it, but she was pushed back. The lot of bad words were used. Imagine Indira Gandhi was such a powerful person. When she said कि Tamil Nadu this Dravidian movement said that, we'll yank out Tamil Nadu out of India. Mr. Periyar, Mr. EVR जो थे, he met Jinnah and he wanted to yank out Tamil Nadu because he thought the entire India is Aryans and वो Dravidian है। और जब इंदिरा गांधी ने बाद में, जब when इंदिरा गांधी came and then she said कि how can you imagine India without Tamil Nadu, right? Then you know what, the Dravidian parties, जितने जो ये लोग rationalist होते हैं और brahminical order पे गाली देते हैं, their reply was that India without Tamil Nadu आपके पेटीकोट के अंदर मिलेगी, आप जाके वहां खोजिए। एंड इस कल्चर और इस भाषा के लोग आज आइडियोलॉजी की बात करते हैं, दलित प्राइड की बात करते हैं, और जो सज्जन बात कर रहे हैं, वो एक यंग सज्जन है, उसके अंदर वे विश नहीं होना चाहिए, वो यंग है, वो स्पोर्ट्स जैसे पॉजिटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है, इज अ मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। एंड नॉट ओनली दैट, वो एक एक तमिल सिनेमा का एक एक्टर है, ही इज एन एक्टर। ये एक्टर एंड स्पोर्ट्स पर्सन कितनी पॉजिटिविटी लाता है समाज में। अब वो लड़का इतने वेनम से भरा हुआ हो, जो कि डेंगी और मलेरिया को कंपेयर कर रहा है सनातन धर्म को, और इसको सिर्फ हटाने की बात नहीं कर रहा है, उसको एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। तो एनीवे, बच्चा है, कुछ भी बक दिया, बकने से कुछ होता नहीं है। 230 एमिनेंट इंडियंस, जिसमें से 11 या 15 हाई कोर्ट के एक्स जजेस और एक दो एक्स CGI भी हैं, उन्होंने अलोंग विद द आर्मी पर्सनल, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, लोगों ने पिटिशन दिया है चंद्रचूड़ जी को, चीफ जस्टिस ऑफ भारत और इंडिया को, कि टू टेक, बिकॉज इन 1922 एक सिमिलर केस था जहाँ पे एक मुस्लिम वक्ता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, एक केस था जिसमें से जस्टिस जोसेफ, जो उस समय जज थे, इसको देख सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर स्टेट FIR लॉज नहीं भी करती है इस तरह के हेट क्राइम को, तो DGP ऑफ द स्टेट सेल्फ एक्शन ले सकता है। बट वी आर वेटिंग दैट टू हैपन, सो इट्स स्ट्रेटेजिकली हो रहा है। I think it's all politics, but it is high time and Dravidian politics should be taken out from the hand of these people who are dividing the समाज। इतना वेनम से जो भरे हुए लोग हैं, इनको थोड़ा डंडा चाहिए। और दिस ब्राह्मणिकल ऑर्डर पे आई थिंक कि all the Brahmins communities should come out and really have a debate कि पास्ट में 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो भी हुआ, देयर हैज बीन सेटलमेंट ऑलरेडी। अगर पास्ट में कुछ हुआ, तो क्या आपका संविधान नहीं है? क्या रिजर्वेशन अब नहीं है? क्या अभी अनटचेबिलिटी ऑफिशियली लीगल है इंडिया में? आप कर सकते हैं। और पॉपुलेशन वाइज पॉलिटिकल जो स्पेस है, वेदर लालू प्रसाद जी हो, यूपी में मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, महाराष्ट्र का मराठा पॉलिटिक्स हो, एवरीवेयर ओबीसी एंड दलित का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है पॉलिटिकली कि अब आपको कौन कैसे दबा सकता है। सो ये कहना कि हम अभी भी बेचारे हैं। और तमिलनाडु में 60 ईयर्स से ओनली द्रविडियन पॉलिटिक्स, इधर DMK आता है या AIDMK आता है। आप 60 साल से उस स्टेट में लिटरली एक किंगडम की तरह हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, और आप अभी भी कहेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मणिकल ऑर्डर के कारण हम लोग सताए हुए हैं। तो ये कोई डेटा से इनको इनको पुशबैक नहीं करता है। और अगर अगर एक रिफॉर्मर चाहिए,
तो रिफॉर्मर आप अपने में बनाइए ना। आप व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? फिर कोई एक ब्राह्मण ही आए और वही बोले कि हम कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उस सिस्टम को मान रहे हो। आप खुद हिंदू हो, आप खुद आओ और कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करो। व्हाई आर यू लुकिंग टू जो आपके सो कॉल्ड ऑपरेसर है उन्हीं की ओर देख रहे हो कि आप आइए और ये सिस्टम को एबॉलिश कीजिए? अगर आपको सोल्यूशन देना है, इतने बड़े आप रिफॉर्मर हो गए हैं, द्रविडियन विचारधारा में सारे इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं वहां पे, इस तरह का सीरियस डिस्कशन एक नेशनल लेवल पे मेरे ख्याल से होना चाहिए। एंड विल सी कि क्या आउटकम निकलता है। जब जब इंटरमीडिएट कास्ट लाइक यादव एंड दलित में इतनी फाइट होती है यूपी में, वेर इज द ब्राह्मणिकल ऑर्डर? ये चार लोग तमिलनाडु में बैठ के 4 करोड़ पॉपुलेशन, 140 करोड़ पॉपुलेशन के पूरे डीएनए को डिसाइड करेंगे? तो राइट विंग में थोड़ा सा स्कॉलर्स चाहिए जो डिबेट करे इनको, माने इमोशनल होने के बजाय इनको डिबेट करे, इनको समझाए, और उसके बाद डंडा भी चाहिए। दोनों 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 जरूरत है इफ दे क्रॉस द लाइन। आदित्य जी, मैं आपने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अभी मैं इंटरव्यूअर का रोल अपना रहा हूँ, आपसे छीन रहा हूँ सनातन के नाम पे। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत बढ़िया रिसर्च किया हुआ है। जैसे शरद जी कह रहे थे कि इनको डंडा से सिखाना चाहिए जैसे भी हो, लेकिन मेरा विचार ये है कि हिंदूज, हम एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड बन गए हैं। शरद जी, आपके भी विचार जानना चाहूंगा इसके बारे में कि हम हिंदू इंडिया जो है सदियों से एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड बन गए हैं। सब लोग हमें अब्यूज करते हैं, लेकिन हमने कुछ सवाल पूछा तो हमको फोबिक डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसका जो समाधान है, इज इट पॉसिबल टू कंटिन्यू डायलॉग एजुकेटेड? बिकॉज वो जानबूझ के कर रहा है। See, there is a debate and dialogue happens between equals. If you do not have knowledge, if you are determined, if you are blind to your blindness, how can you have a discussion or a debate? So education is a must. So my question is a dual question. To what extent are we responsible for not disseminating the knowledge, information to our own children and our own people? And to what extent स्टालिन हु इज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, उसकी पिक्चर भी देखी जा चुकी है। आपने भी बहुत बढ़िया बात कही है कि 60-70 साल से तो तुम ही चला रहे हो तमिलनाडु को, किसको ब्लेम कर रहे हो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में फिर? सो इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर द डैम इविल और यू आर इनकॉम्पिटेंट. Now you need the Brahmins to solve your problem. So the question arises, how do we take what needs to be done? अगर हाथ कट गया हो तो पहले तो बैंडेड लगा के पहले तो खून बहना बंद करें, उसके बाद तो इलाज करें कि क्यों हुआ था. So my famous analogy is that if you are having a diarrhea, at that time there is no need to go on a health plan. Get something, get Imodium to stop your leak. Then we think about why it happened. Both of you. So, very nice question. इसमें हमको वापस we have to go back to history actually. If you go back to the history, then if you look at the church, if you look at the European caste system, जो कि Vatican ने support किया, उसको promote किया. And if you look at the current governments, at least 2 states in South India, Vatican, Kerala, and दूसरा Tamil Nadu. Both these 2 states, we see the Vatican is indirectly ruling the states. Vatican का program है to start the, हम लोग हर चीज कम्युनिज्म पे वेस्ट करते हैं, लेकिन who is funding communists? Communists are very poor. China doesn't give money. China gives money indirectly sometimes, but most of the time these people get money from some other sources. See, these people are being funded from Vatican and other churches and other organizations to create a Brahminical hatred. One of our viewers just now, the text has come, we'll take her question. So she just writes that Brahmins have been eradicated. Let us bring it up actually. ब्राह्मणों का हालत तो बहुत ही खराब है. Sharad Mohan ji also said only 3% left. So Brahminical hatred means, अभी हम वेदों को पढ़ें, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, जन्माष्टमी भी है, जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. These are the
words of Bhishma to Krishna when Bhishma and Krishna are talking. And ये जो प्रेयर है भीष्म कर रहे हैं कृष्ण भगवान को. So वहां पे बात है नमो ब्राह्मण्य देवाय, मतलब ब्राह्मणों के देव, जो ब्राह्मणों के देव है कृष्ण, उनको नमः कर रहे हैं भीष्म. So the point is, the if the Brahman or Brahman is not by birth, is by qualification, good or karma. So if they are not respected, then the Hindu Samaj will break up, and because they are the teachers of our society. सबसे बड़े दुश्मन थे अंग्रेजों के ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, तो द मेजर फोर्स ऑफ द चर्च वाज इनिशियली टू इन्फ्लुएंस द ब्राह्मण, ताकि वो उनको बाकी सोसाइटी को कन्वर्ट कर सकें या बाकी सोसाइटी को इजीली हर्ट कर सकें. तो ये it has been a historical policy of the colonizers to attack the Brahman community, and which I totally disapprove of. क्योंकि आज if you are looking at equality, then everyone has the equal right over the state resources and the society, in the society. So now in today's space, Charad ji का point था वो, in today's space if we are still allowing discrimination to happen, whether against anyone, then it is a problem of the today's government. एंड फॉर दिस स्टेटमेंट, इंडिया, मेरे को विभूति जी, मेरे को ऐसा भी लगता है कि जब से इंडिया बना है तब से वो इंडिया वालों जो जो इन INDIA जो इन लोगों ने बनाया है, वो उन्होंने अपनी भारत की सभ्यता की हेट्रेड को सामने रख दिया है. अभी जो हम भारत के लोग हैं, जिसको हम भी भारत बोलते हैं, किसी भी पाकिस्तानी को पूछेंगे वो भारत ही बोलेगा, इंडिया नहीं बोलेगा, कम बोलते हैं इंडिया. तो भारत is a commonly popular name across Asia, and it is a more beautiful name. I think the more Bharat consciousness is coming, people like this, जिनका अस्त हो चुका है, अस्त स्टालिन, ये लोग, they will also rear their heads up. So it's time for law to take action, because law should be held equally. और क्यों तमिलनाडु में 3% ब्राह्मण बचे हैं, क्यों ऐसा, क्यों, जबकि वहां पे सबसे ज्यादा टेम्पल डेंसिटी है पूरे भारत की. So this is a shame on us. This time, Brahman percentage of Brahman community in Tamil Nadu should be at least 50%. अगर इतने सारे मंदिर भी हैं तो. I'll give it back to you, Sharad. शरद जी. या तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, डंडा और डिबेट दोनों जरूरत पड़ेगा. डंडा मीनिंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी है रूल्स, और अभी शुरुआत हुई है. देखें चीफ जस्टिस क्या करते हैं. अगर इंडियन अगर लॉजिक ये है कि भाई सनातन धर्म और सनातन धर्म कोई एक पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई एक बुक नहीं है, तो एक मनुस्मृति कोई लोग बार बार कोट करते हैं, वो भी एक उस पे भी काफी प्रश्न है. तो और फिर वो लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज ऐसे करते हैं. अगर धर्म इज अ बिलीफ सिस्टम, राइट, लेकिन भारत प्रैक्टिस क्या करता है आफ्टर 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या आपका संविधान जो कि रिजर्वेशन देता है दलितों को और पिछड़ों को, क्या वो अभी तक इफेक्टिव नहीं है? तो क्या हमें नया संविधान लिखना चाहिए? दलितों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, या नॉट दलित, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, द्रविडियंस को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट हेल्प यू टू कम अप एंड स्टिल आप मुख्यमंत्री रहते हैं उस राज्य के, और 60 सालों के बाद भी आप यही सब इश्यूज को उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम. लेट अस चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वैसा इशू है तो. दूसरा है कि जो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसमें से, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक हमारे फाउंडिंग फादर्स मॉडर्न इंडिया के, नॉट नॉट भारत के, मॉडर्न 1947 वाले भारत के, इन्होंने एक मिस्टेक किया कि एजुकेशन को इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट दे दिया, और ये इनको पूरी अधिकार मिल गई अपने हिसाब से टेम्पर करने का हिस्ट्री. सो इफ यू गो एंड सी तमिलनाडु एंड इफ यू टॉक इवन एक इनोसेंट लड़का, their understanding of the entire history and Dravidian and their ethnicity is very different. They have converted ethnicity into a race. एथनिसिटी को रेस बोलते हैं, एंड तमिल इज अ रेस, जो कि कोई सर्टन अफ्रीकन से आया, और सो दे हैव देयर ओन स्टोरी. दिस वाज ऑल गिवन बाय मिस्टर कैडविल, जो कि काफी वाज वेरी वेनमनस. तो
सबसे पहले तो एजुकेशन, ये जो बुक्स है जो हमारे बच्चों का माइंड को पॉल्यूट कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। और एजुकेशन को सेंटर को लेना ही पड़ेगा अपने अंडर में, स्टेट को नहीं दे सकते हैं हम लोग। चाहे उसके लिए जितने भी फाइट सेंटर को करना पड़े, डिसमिस करना पड़े स्टेट गवर्नमेंट को, लेट्स डू इट। नो नो इश्यू विद दैट, डेमोक्रेसी फिर कभी बचा लेंगे। तीसरी बात है कि पहले ये सब बातें होती थी ज्यादा तमिलनाडु में ही होती थी, लेकिन अब जो है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के एक मौर्य नाम के एक पॉलिटिशियन है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पे स्टेटमेंट दिया। तो इट्स ऑल वेरी वेल प्लान्ड। एंड देन कांग्रेस के जो खड़गे जी हैं, उनके पुत्र ने सपोर्ट किया, या कार्तिक चिदम्बरम, मिस्टर चिदम्बरम के पुत्र ने सपोर्ट किया। तो ये पूरा प्लान्ड वे में ये अटैक है। और आई डोंट थिंक ये एंटी इंडिया अटैक है, ये बेसिकली ऑपोजिशन को लग गया है कि हिंदू जो है अगर यूनाइट होगा तो फायदा बीजेपी को होगा, एंड देयरफॉर हिंदू हैज टू बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन कास्ट। एंड इसीलिए इन्होंने कास्ट कंसेंसस और ये सब शुरू किए हैं। Now, lastly, what I would like to say is कि अगर रिजर्वेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं अपलिफ्ट कर पा रही है और स्टेट में पावर, तो ये सभी को एबॉलिश कीजिए। कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करना है, रिजर्वेशन को एबॉलिश कीजिए। लेट एवरीबडी बी सेम, लेट मेरिटोक्रेसी देन कम इनटू द पिक्चर। जिसके किसी का जात नहीं पूछिए, सरनेम हटा दीजिए, एंड लेट मेरिटोक्रेसी बी द लॉ ऑफ द लैंड, एंड लेट्स सी कि हाउ इट हेल्प्स। तो आपको कुछ सोल्यूशन देना पड़ेगा, आप सिर्फ लड़ नहीं सकते। एंड दिस इज वेयर द्रविडियन पॉलिटिक्स को ज्ञान, डिबेट एंड डंडा दोनों चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत दिनों तक बर्दाश्त कर रहे हैं। अब पानी सर से ऊपर गुजर गई है, वी कैन नॉट टॉलरेट इट, एंड पूरे इंडिया को इस पे आना चाहिए। दैट्स ऑल आई कैन से। Aditya ji, as a TV host, I can ask questions day, night, and day long, but the show is yours. So I'm handing back the show to you. SB403 विभूति जी, आपको भी इस पे अपना ओपिनियन देना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक कि डंडा और डिबेट, या दोनों, या व्हाट इज द वे यू थिंक वी शुड हैव? आप दोनों ही को इस चीज से परिचय है, साम दंड भेद भाव सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उनका प्रयोग भी होना चाहिए, उसका उपयोग भी होना चाहिए। एंड आई फील कि हम जो है हिंदू लोग जो है, खास करके हम लोग सब एक ज्ञान पेलने में सब तैयार होते हैं, करने वाला नहीं है। सो हम जो है मेरा जो फेवरेट थिंग है इज दैट व्हाट आई वांट टू से इज दैट इट इज लाइक विचार विमर्श विश्लेषण विमोचन विख्यान। We Indians love to do that, but we forgot the essential lesson of Bhagavad Gita to do our duty and dharma. This is what is important. We have to question the basic element of what the dispute is between religion. It is religious. Let's not get confused by that. Let's not go beyond analyze. Let's not suffer from the paralysis of analysis. What I'm saying is that conversion, I say this all the time, conversion is a sin against God's original intent. I want to challenge Pope or any Maulana, and I will want to both of you to come and join me in the debate with them. Conversion is a sin against God's original intent. He made you and I, the real magician made us who we are. If God wanted me to be a Christian or a Muslim, he could have done it like this. But he made us who we are. Raghunandan ji sawal pooch rahe hain. He is what Raghunandan. He is not Vibhuti, he is not Robert, or he is not Rahmatullah. So the question here is very important to ask amongst us. If we do not question that basic, that the conversion is a sin against God's original intent, we defeat ourselves. Let's begin with the fundamental question. Why are you asking me to convert?
Why are you asking me to convert? I have no problem. I say this again and again. I have no problem if you have found Jesus to be your ultimate savior. I'll respect that. Leave me with my Krishna and Ram and Shiva. I'm delighted that you feel Allah is the supreme. Good for you. Leave me with my Krishna, Shiva, and Ram. Why can't you do that? And when you do come to me to convert, that's the time when you are insulting Allah's and God's original intent. You do not. It's a text. Conversion is a political instrument. It's not told by God. We have to begin to, the Hindus have to begin to question the basic elements of that. And for that, we have to demand reciprocity. We have to demand reciprocity. See, if Chidambaram says, Chidambaram nahi, Sharad Pawar says, you had no right to change the name of the country. All right. The question is, who changed the name of the country? How did Prayagraj become Allahabad? Right? The basic question. Didn't Chennai change its name from Madras to Chennai? Didn't Calcutta become Kolkata? Didn't Bangalore become Bengaluru? Why not then? That's the element that we forget. The Hindus have a basic problem. We become defensive very soon. At the first instance, we say Shanti chahiye. And that's what my dear Pakistani friend told me. आप हिंदू लोग बड़े शरीफ हो, आप शांति के नाम पे सब कुछ दे दोगे और उसी शांति के नाम पे हम आपकी ले लेंगे. These are the exact statements. When are we going to figure that out? So when somebody abuses our constitution and our dharma, pointing out what they feel is stupid without knowing it, then we have a right to question. And I did that. I do that. Because this is where we have to begin to question. For example, I will tell you the halal part. We must do a full conversation on this halal thing. Okay, you have meat eating practice of halal. Okay, I have no problem with that. But why must rice, dal, and haldiram mithai have the halal certification? Why do you need that? That's a question that we must ask. That is the way we have surrendered our right to ask questions. So with these words, I will end. We are coming to the close of the time today. Thank you, Aditya. One last point. Yeah. SB 403 was designed to destroy Sanatan Dharma in California against Hindu culture. Laws are being made और सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण इसीलिए किया जाता है बार बार. अभी इफ यू लुक एट द नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री ऑल्सो, द नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री फ्रॉम अमेरिकन सेटलर परस्पेक्टिव इज टुडे गॉस्पल वाज रीच टू चिकवान ट्राइब, टुडे गॉस्पल रीच टू ओजिब्वा ट्राइब, टुडे गॉस्पल वाज, इस तरह हिस्ट्री लिखी गई है कि हर जगह. सो द बिगेस्ट आइसोर इन द वर्ल्ड इज द सनातन धर्म और हिंदू कल्चर बिकॉज it doesn't follow the homogeneity culture of the Abrahamic religions. Homogeneous. Because homogeneous population can be easily controlled. जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में कोई हाईवे बंद कर दीजिए, पूरा एरिया ही बंद हो गया, because it's like a homogeneous highway. तो the point India में the eyesore has become the Hindu culture, especially states like Tamil Nadu and Kerala, जहाँ पे वैटिकन का बहुत प्रभाव है. इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज ये सारी गड़बड़ी इन स्टेट्स में, और वेस्ट बंगाल में इस्लामी जो फंडिंग का बहुत उसमें भाव है. जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं वहां पे फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है और फॉरेन ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व है. अमेरिका का भी यही प्रॉब्लम है. एक भी नेटिव अमेरिकन कल्चर या नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करने दिया चर्च ने. आज गायब हो गए, लेकिन क्या है कि रहेंगे क्योंकि सन ऑफ द सॉइल है, दे विल स्टे हियर. लेकिन सबके नाम ऐसे हैं, जॉन व्हाइट टेल, जॉन दिस टेल, जॉन ब्लैक टेल. मतलब नाम भी उन्होंने अंग्रेजों के हिसाब से रखे हैं कि कौन सा किस पक्षी को फॉलो करता है. मतलब द पॉइंट इज कि दे वांट टू पुट सनातन धर्म इन ए म्यूजियम, और भारतीय लोग म्यूजियम बनाने बड़े खुश होते हैं. अरे भाई, कृष्ण की मूर्ति है, म्यूजियम में क्यों रहेगी? उसकी बाहर पूजा होनी चाहिए. अभी मैं एलए काउंटी का जो म्यूजियम है उसके विरुद्ध में एक्शन जरूर लूंगा. और हिंदू अमेरिकन कर रहे हैं सब कुछ. हिंदू अमेरिकन आर रेजिंग द वॉइस. इस तरह के शोज आपको इंडिया अमेरिका से ही आ रहे हैं. हम ही लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट आवर मतलब माय कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया. तो विभूति जी, देयर हैज टू बी वन कंक्रीट एक्शन.
और SB 403 के पीछे भी चर्च का मोटिव एंगल है, और इधर भी हम देखते हैं चर्च का एंगल है, टू शो हिंदूज लोअर. So what can we do to rise, or to the duck which quacks the loudest gets the cracker, to speak up? What should we do? Three words: take yourself seriously. Take yourself seriously. Don't take yourself for granted. Don't let anybody take you for granted. Contest, arise, awaken, assert, and act. These are the 4 A's. I give the tribute to Swami Vivekanand ji to give us the clarion call for arise, awake, and assert, to which I have added my 4th A called act. I am totally we are doing the charcha here, but it is important for us to also act. We have forgotten the lessons of acting. And this is where we are trying to invoke people. Do get up, do whatever you can do individually, collectively, and using the institutional framework. So for Hindus, it is very important to know that SB 403 happened because we were sleeping. Because same Equality Lab peddled a bogus report, and now everybody knows about it. It was a bogus report, but it was made into a currency through a support of certain vested interests. But we Hindus did not take advantage of the Carnegie Foundation research and Pew Research, which categorically said that there was no evidence of caste-based discrimination. My disappointment is the hundreds of CEOs and Silicon Valley geniuses. वो सब मंदबुद्धि के हो गए हैं. आज उनमें मर्दानगी नहीं है. मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, सिलिकॉन वैली एंड ऑल द 100 or plus senior CEOs of many multinational companies. Can you come out and just make one statement that we are who we are and where we are based on pure merit and performance? We passed the selection test. There was no caste consideration in our success. I will tell you, their stock value of their companies will go up, not go down. आदित्य जी, ये चर्चा बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही फैक्चुअल है, and we have to kind of ask these questions. We have forgotten. We have become submissive. हम रास्ते में पड़ जाते हैं मार खाने के लिए. 4 लोग आते हैं, तलवार भांजते हैं, हम गांव छोड़ के भाग जाते हैं. ये पलायनवाद का जो कल्चर हमारे अंदर आ गया है, इसको हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा. And I'm a strong believer. We run a company called Human Potential Project, and in that company, our objective is installing performance-based culture. And installing performance-based culture is a function of your ability, your commitment to do the best that you can. आज तक किसी को ओलंपिक गोल्ड मेडल और वर्ल्ड कप सॉकर में मेडल नहीं मिला because of a reservation category. That every Indian has to realize. And every Indian who has won a gold medal in Olympic, wherever, they didn't get it because of reservation. They performed. And performance matters. That culture we have to re-embrace. पुरुषार्थ और पराक्रम का जो हमारा जो कल्चर था, उसे हमें re-embrace करना पड़ेगा. आदित्य जी, that's enough for me. Sharad ji, last point from you, and we close the show after this. Okay. तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जनरलाइज कर रहे हैं सारे इस आंसर को. मेरा अपना पर्सनल व्यू है. तमिलनाडु का जो इवेंट है, इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिश्चियन कन्वर्जन इशू. ओके, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, डेफिनेटली इट वाज सपोर्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम बाय कैडविल एंड अदर्स, बट द्रविडियन पॉलिटिक्स अपने आप को रैशनलिस्ट एंड एथियस्ट बोलता है, राइट? मिस्टर पेरियार वाज नॉट अ क्रिश्चियन. ओके, अभी वहां पे कन्वर्जन बढ़ गई है, लेकिन ये जो द्रविडियन इशू है, इट्स प्योरली दलित वर्सेस ब्राह्मण फाइट. और ये इसको इंडिया की जो अदर पार्टीज है, उसको कास्ट लाइन पे सनातन के अंदर जो कास्ट फॉल्ट लाइन है, उसको लोग बढ़ा के यूज करना चाह रहे हैं. एंड उस पे टॉप जो तड़का लग रहा है वो क्रिश्चियनिटी का अभी आ रहा है, क्योंकि जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जैसे कि एक कंचन इलैया करके एक स्कॉलर्स है, तब जो बहुत ही वेनमनस लिखता है अगर सनातन. और ये लोग ब्रेन है इस पूरे मूवमेंट के. तमिलनाडु, उसका पूरा नाम है कंचन इलैया शेफर्ड. ही इज अ कन्वर्टेड गाय.
And I was hearing his debate yesterday, and he was supporting this SB 403 of California. वो उसके पास नहीं तो ग्रीन कार्ड है, नहीं तो OCI कार्ड है, मे बी एक दो बार US आया होगा. Sitting in Tamil Nadu, in the midst of this problem, he's quoting कि these Brahmins and these Hindus ने SB 403 का विरोध किया है, देखिए US में क्या हो रहा है. तो ये मैं इसको एक सिंपल हिंदू वर्सेस वेस्ट नहीं देखता हूँ. मुझे लगता है कि बहुत सा फैक्टर है इसमें. पहला, लास्टली, इंडिया इज अ मार्केट फॉर इंटायर वर्ल्ड, राइट? इट इज इंडिया इज द ओनली मार्केट जो खुद पैदा कर सकता है और खुद कंज्यूम कर सकता है, अनलाइक अदर कंट्री. दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट. और रिलीजन पर्सपेक्टिव से भी कहाँ मिलेगा 140 करोड़ अवाम जिसको कन्वर्जन किया जा सके? चाइना एक सिमिलर कंट्री है, बट चाइना में आप घुसेंगे तो आप कट जाएंगे. वहां पे कम्युनिस्ट घुसने नहीं देगी आपको इतना फ्री फ्लो के लिए. इस्लामिक कंट्री में आप नहीं आ सकते हैं. वेस्ट की बात कर रहा हूँ. तो एक ही बाजार बचा हुआ है फॉर इवन फॉर द धर्म के ठेकेदार, जो कि भारत है. 140 करोड़. तो यहाँ पे ये अटैक रेगुलर होगा, एंड दिस इज वेयर your guys and your system has to have a muscle power. अब हमारे पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, बट we feel so vulnerable. So this is where I will leave. यूथ को जागना पहली पड़ेगा. बात पहली बात तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आप दोनों ने बोले. कास्ट यूरोपियन वर्ड है, उसका भारत से कोई संबंध नहीं है. और जहां भी चर्च गया है वहां गरीबी आई है. तो people should know कि wherever church is ruling, that country is poor. Look at South American countries. अमेरिका में चर्च नहीं रूल करता है, चर्च इज इन द साइड में, लेकिन इन्फ्लुएंसेस लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. जहां जहां चर्च की रूलिंग है और वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं. अमेरिका में भी रिपब्लिकन जो हैं ज्यादातर सेक्युलर रहते हैं, रिलीजियसली न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए अमेरिका ग्रो भी कर रहा है. और जहां जहां भी चर्च का फेनेटिसिज्म आता है, वो डेमोक्रेट स्टेट्स हम देख रहे हैं, वहां गरीबी बढ़ रही है. डेमोक्रेट्स अगर देखे जाए तो चर्च की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, बिकॉज चर्च का होता है पावर्टी के नाम पे गरीबी. सो आई थिंक देयर अल्टीमेट गोल इज टू मेक इंडिया पुअर. रिलीजियसली कन्वर्जन का एक अल्टीमेट गोल है, ताकि वेस्टर्न पीपल हैव मोर पावर ओवर इंडियन पीपल. दैट इज द होल पॉइंट. अगर आप ब्रिटिश राज को भी देखें, उनका मेन पर्पस था कि भारत लोगों को हीदन से, हीदन मतलब पत्थर या उससे भी नीचे गिरे हुए, उससे उठा के चर्च के मेंबर्स बनाया जाए. तो ये पर्पस था. एंड हम लोग को ये इतिहास है, लोग देख सकते हैं, पीपल कैन सर्च. इवन विकिपीडिया विल एक्नॉलेज दैट, इवन दो आई डोंट बिलीव इन विकिपीडिया और चैट जीपीटी. और विवेक रामास्वामी हिंदू प्रेसिडेंट बनेंगे जब अमेरिका के, तब उससे पॉजिटिव भारत में इफेक्ट नहीं आने वाला. भारत के अगेंस्ट पॉलिसी सेम रहने वाली है. वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, भारत के नहीं है. तो he will also follow the same politics for which it represents. With that, I'll stop here. And if no one has any comments or questions, मैंने सबके points इधर दिखा दिए. And Vibhuti, you wanted to say something? नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य एक ही है. मैं लोगों को कहता हूं कि आह्वान देता हूं. And I request everybody who is watching the show today or will watch later on, make a determination to do something what you can do. And I'll give you an example of that. I decided I'm not going to buy things halal. चाहे मैं काजू कतली और हल्दीराम का खाऊं या ना खाऊं, but I will not buy halal. I will ask questions to Dabur, Patanjali and others. You can send export purposes, आप उसको halal certify करिए, but don't sell me halal. That's my question. That is a stand you take. It's not against halal. It's against our practice. This is what I can do. Let's begin that part of the movement. Movement begins with one. That's what we have to do. Collect individually, collectively, and using the institutional framework. I'm not against halal. Go ahead, do what you want, but don't sell that to me. And I have the right not to buy. So exercise your right. Begin somewhere. And I tell you this, I will say this on another show. I've said this before. This is the JFK moment for all Indians. You know what I want to say? When you remember JFK's famous quote, don't ask what the country can do for you. What are you doing for the country? My question to all Hindus and Sanatanis and Dharmic people is, don't ask what Hindus and Sanatani can do for you. What are you doing for your Sanatana and Dharma? That's all. Thank you very much. Thank you very much. नमस्ते, जय जगन्नाथ, और सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Absolutely.
जय श्री Happy कृष्ण। Dharma. Jai सत्य Jagannath. सनातन की जय, सत्य सनातन की सनातन जय। की जय। थैंक यू।